Endoplasmic reticulum is a very important organelle in a eukaryotic cell. These organelles are membrane bound and involved in transportation and modification of different compounds. They are exporting it outside the cell to other cells, inside the cell even. These endoplasmic reticulum, which is abbreviated as ER, सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई, that was 1945 by the Albert Cloud, and they were found in the cells of chicken embryo. Endoplasmic reticulum, actually that is a system of channels and sacs. So if we look at this image, here we can see this is a transverse section of endoplasmic reticulum. Actually the upper ends are not open, ये बिल्कुल close होंगे, लेकिन इसका एक transverse section जो है वो इसमें image जो है इसमें दिखाया गया. So here we can see that this is a network of channels, और ये सारी channels जो हैं एक दूसरे के साथ joined हैं. Either ये आपको ऊपर से join नजर आती हैं या ये अपनी bottom के साथ एक दूसरे के साथ join है, and they make a network like a maze network. So these membrane systems are continuous, they are joined and they are connected with the nucleus. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि this is the nuclear membrane, और इस channel की joining जो है वो इस point के ऊपर nucleus के साथ हो रही होती है, which means कि ऐसी transportation which is being synthesized inside the nucleus, they can be transferred inside these channels, और उन channels की help से इसको cell के बाहर या cell के अंदर जो है transportation की जा सकती है in the form of vesicles. So if we look at these structures of endoplasmic reticulum, we can divide them into two types. Here यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि the outer membrane of ER, it contains the dots, and these dots are ribosomes. So ये वो ribosomes हैं which are membrane bound ribosomes, and these membrane bound ribosomes are synthesizing proteins, और उस प्रोटीन को सिंथेसिस करने के बाद वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है. ये वो प्रोटीन्स हैं जिनको के सेल से बाहर भेजा जाएगा, बिकॉज दे टारगेट सेल इज समवेयर एल्स, नॉट दिस सेल. बट देयर इज एन अदर टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डजंट कंटेन एनी राइबोसोम. इस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So these are two types, rough ER and smooth ER. Rough ER or RER has the ribosomes attached to the outer membrane, और इसका function जैसे कि अभी हमने कहा कि ये ribosomes जो भी protein produce कर रहे हैं, that protein is transported inside these endoplasmic reticulum, और वो इन channels में से move होती हुई with the help of exocytosis it would form a vesicle, और वहां से फिर वो उसको एक्सक्रीशन का प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल में से एक्सक्रीट कर दी जाती है. So it would be similar to this, this outer membrane, it is sending these proteins, and then these proteins are pinched off, and then it would make a vesicle containing protein, and these proteins are exported outside the cell. So before they are exported, the one process is their modification, which is being done in endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी है, बिकॉज वी नो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में प्रोटीन्स के साथ कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी अटैच हो जाते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, तो उनको क्लीविंग के थ्रू कटिंग की जाती है, या अगर इस प्रोटीन के अंदर कोई और ग्रुप ऐड करना है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एंजाइम्स टू इंक्रीज इट्स लाइफ, those groups are also added, and the one example of this modification is glycosylation. So mostly RER या rough endoplasmic reticulum is also connected with Golgi complex, which we will discuss later, and this is making a complex network of channels, vesicles and cisternae and sacs, और इनका जो major function है वो दो ही हैं कि one is modification of protein and second is transport of protein. दोनों गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस एंडोमेम्ब्रेनस नेटवर्क को साइटोस्केलेटन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, एंड देन दे आर केप्ट एट वन प्लेस. टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी वॉच दिस वीडियो. Rough ER or RER is located very close to the nucleus.
Rough ER gets its look from tiny protein factories called ribosomes, which are embedded in its membranes. The rough ER produces proteins. Some of these proteins will be transported from the ER to the Golgi apparatus. Other proteins will cross the ER to other parts of the cell or will be packaged in small sacs called vesicles, which will pinch off and travel throughout the cell. Smooth ER looks smooth because it does not contain ribosomes. It has a different job than the rough ER. The smooth ER produces important chemicals called enzymes, which may pinch off into a vesicle and travel to the Golgi apparatus. The smooth ER also produces lipids, which are important fats used by the cell. The smooth ER will transport these lipids throughout the cell or will package the lipids in vesicles and release them into the cytoplasm. In summary, the ER is a transportation system used by the cell to create and transport proteins, enzymes, and lipids throughout the cell. सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ साथ SER का अदर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. So excessive carbohydrates are also stored in smooth endoplasmic reticulum. इसके अलावा detoxification of toxic compounds. For example, we know that हमारा liver जो है वो detoxification का काम कर रहा है in our body. So ऐसे blood stream के through वो toxic materials जो कि liver cells तक पहुँचते हैं. So the SER in the liver cell is capturing those toxic compounds. They are transferred to SER and SER will detoxify them either by breaking them down or by attaching a group, a chemical group to those toxic materials which will make them intoxic. या वो toxic जो है उनकी toxicity जो होती है उसकी intensity कम हो जाती है. So इसके अलावा they are also synthesizing material for the membrane. We know that हमारी membrane is of organelles या plasma membrane है. It is made up of two compounds, proteins and phospholipid bilayer. So these materials are synthesized inside SER. Other than it, ऐसे compounds या molecules which are already present in the cell and they need certain modification, they would be sent to SER and SER में इनकी modification perform की जाती है. So RER के opposite SER is performing diverse functions other than only the transportation and modification. So both SER and ER are important components of endomembranous system of a eukaryotic cell and playing different and important roles.